Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. हेलो दोस्तों, फेस टू फेस के वीडियो नंबर 222 में आपका स्वागत है। दोस्तों 222वां नंबर वीडियो है। आपने इसके पहले के अगर वीडियो नहीं देखे होंगे ना, तो आप देखिए प्लीज़। और अभी तो इतने ज़्यादा हो गए कि आप लग रहे होंगे सर कहाँ से चालू करें। तो मैं आपको राय दूँ, वीडियो नंबर 1 से चालू करिए। बिकॉज 1 जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज वही इस्टेब्लिश करता है ये पूरे फाइनेंशियल मार्केट की जर्नी में, मेरी जर्नी में, और आई एम श्योर आपकी जर्नी में भी। वैसे दोस्तों, फेस टू फेस का माध्यम एक सीधा सा है कि मुझे सेल्फिश होना था, मुझे सीखना था। और जब मैं सीखना चालू किया, मुझे लगा कि अरे क्यों ना आपको भी सिखा दूँ। तो बेसिकली इट्स अ कलेक्टिव जर्नी ऑफ ऑल ऑफ अस, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, एंड लर्निंग द आर्ट एंड साइंस ऑफ इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। पिछले कुछ वीडियो से आपने देखा होगा कि मैंने एक फोकस किया है कि जो यंगर मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं ना, और जो सीरियस है, जो मार्केट में कोई फ़िलॉसफी लेके बैठे हैं, कोई काम करने का तरीका लेके बैठे हैं, उनसे बातें करूं और आपको उनके फ़िलॉसफी, उनकी थॉट प्रोसेस को भी सिखाऊं, साथ में इंस्पायर करूं। तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था मयंक मेहरा का, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, वेरी यंग चैप बट फोकस्ड ऑन इक्विटी इन्वेस्टिंग। और फिर अभी रिसेंटली मैंने रिकॉर्ड किया था कौशिक का, जो मैंने लाइव किया था लास्ट। कौशिक मोहन इतना यंग है, उसके दादाजी इन्वेस्ट करते थे और वहाँ से उसने पिक किया। कई लोग तो बोलते हैं कि वो मोटा मोटी अपने दादाजी जैसी ही सोच है उसकी, एंड ही इज़ अमेजिंग इन व्हाट ही इज़ डूइंग एट सच अ यंग एज। तो आज मेरे साथ जो गेस्ट आए हैं वो भी एकदम यंग है, तरोताज़ा, 28-29 साल के हैं, एंड मार्केट के अंदर में अपने आप को अब इस्टेब्लिश कर चुके हैं। मैं पिछले आई थिंक 2-2.5 साल से जानता हूँ, एंड आई हैव सीन हिज स्टोरी, आई हैव सीन हिज ग्रोथ, और मुझे लगा कि फेस टू फेस में इनका होना ज़रूरी है। तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि यार घर घर में अब कैपिटल बिल्ड हो रहा है, इन्वेस्टिंग सरप्लस क्रिएट हो रहा है, तो एसेट एलोकेशन क्या होता है, कैसे इन्वेस्टमेंट करें, क्यों इक्विटी अच्छा एसेट क्लास है, और अगर मुझे एक टिपिकल हाउस होल्ड का फाइनेंशियल मैनेजमेंट को डिफाइन करना हो तो कैन यू हेल्प मी इन डू दैट। प्लस इक्विटी तो करेंगे बात, बिकॉज दैट्स हिज फोर्टे। सो आज के फेस टू फेस में, इस वीडियो में पहले उनके बारे में जानेंगे, फिर कल फ्राइडे को रिलीज़ करूँगा पूरा डिटेल रिसर्च ऑन व्हाट ही डज, हाउ ही डज। सो लेट्स वेलकम ऑल टुगेदर साकेत इनटू फेस टू फेस। Hello, thank How are you? I'm very good. How are you? Very nice, very nice. Saket, it's been a while. दो साल हो गए अपने को मिले। Yeah, I think हमारी first meeting happened virtually, right when COVID was at its peak. Yes, yes. I think we had also had the privilege to record a video virtually on Reliance. अरे तो मैं भूल ही गया। ये बात तो बताइए, भूल गया। रिलायंस पे क्या था हमने ना? Yes, it was. इन्फोएज पे भी क्या था कभी? Yes. ये चर्चा हुई थी अपनी। Again, even that was virtually. Yeah. So I think वो पहली वीडियो थी जो मैंने YouTube में रिकॉर्ड की थी, और you can say my first video on the internet that was with you. Amazing. And I think how you had discovered it is that I had written an article on Reliance. Yes. And why I think this is a business that people are not looking at, and there was this whole value unlocking happening, geo, retail and whatnot. So that was, I think, one of the first videos we did together. Yes. And yes, ever since then we've been in touch, and I'm glad that finally we could do this physically after doing it virtually twice. एडवांटेज होता है आपके साथ, क्योंकि आप कलकत्ता में हैं, तो इट्स ईजियर फॉर मी टू प्लान थिंग्स विद यू गाइस। रिलायंस से मुझे याद आया कि रिलायंस की जो स्टोरी है, वी हैव बीन स्पीकिंग अबाउट दिस फॉर सम टाइम नाउ, और मैंने आपका आर्टिकल कहीं पढ़ा तो मुझे लगा यार ये बंदा वही बात कर रहा है जो मुझे लगती है, तो कनेक्ट तो करना ही चाहिए। तो यस, इट वाज अ ग्रेट इंटरेक्शन। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दैट इंटरेक्शन। मुझे तो एक्चुअली पता ही नहीं है कि वो होस्ट कहाँ हो रखा है। आई थिंक वो स्टॉकेज का यूट्यूब चैनल में होस्ट हुआ हुआ है। वो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग था, सालों साल हो गए उस बात को, बट आज भी आई थिंक वो फिलोसॉफी रिलायंस वाली अभी भी वैलिड है। बिल्कुल, कुछ वैल्यू अनलॉकिंग हो चुका है। यस, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो पहले इतना फेवरेबल था उतना नहीं रहा है, बट स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो बिफोर वी कैन कंसिडर इट टू बी फुल्ली अनलॉक्ड। Absolutely. I think अब क्या है कि एक नई डायमेंशन आ गई है on green energy, which can again be like a big optionality for Reliance. So we'll have to see how it pans out. I think with Reliance the question is not about whether execution होगा, but it's about execution कितना fast होगा। एक्सपेक्टेशन भी उन्होंने ऐसी कर दी अपने प्रति। हमारे लिए बहुत आराम है, हम क्या है ज़्यादा एग्जीक्यूशन ज़्यादा अच्छा दिखाते नहीं है लोगों को।
तो एक्सपेक्टेशन कम रहती है. चले कोई नहीं, it's not about us, it's about you today. Saket, tell us about your story, why you are what you are in market obviously. बाकी तो पर्सनालिटी तो मॉम एंड डैड की देन है. बिल्कुल. So I think like if I go back to talk about my journey, I always had an interest in numbers. चाहे like school में maybe you can say कि कहीं ना कहीं मैथ्स में एक एज रहता था. आई यूज टू लाइक डूइंग मेंटल मैथ्स, सो यू कैन से नंबर्स के प्रति एक फैसिनेशन थी. बट आफ्टर माई स्कूलिंग when I got into graduation and I got a chance to get into Xavier's in Calcutta. And during that time, a couple of my friends who had taken the commerce field, they were saying कि भाई CA का फॉर्म भरने जा रहे हैं. And I kind of tagged along with them, not knowing what I'm getting into. But as luck would have it, when I look back, I can probably say that that was probably a good decision to make. That I took up a degree in finance, and over the years, it actually helped me unlearn a lot of things. तो आपने CA किया? जी. और फिर उसके बाद? So I did my first I completed my graduation. Okay. फिर मैंने CS किया. फिर मैंने CA किया. Right. So it kind of was like 14, 15, 16. Like these were the 3 years, and 1 year like एक milestone I was able to hit. Amazing. So that happened, and उसके बाद during the course of articleship, I worked for 2 years. So being a CA, you can either do 3 years of articleship, or you can do 2 years of work in a firm, which is kind of like a internship. Achha. And then for a year, you could opt for industrial training. Okay. So 2 years I worked with a firm in Calcutta. That's when I got to know कि books of accounts बनते कैसे. Although उसके पहले पढ़ाई होती थी कि बैलेंस शीट को बैलेंस करना या जर्नल, P&L, very basic stuff. But I think that lays the foundation for you to understand how the accounts are really made. And उस समय बहुत सारी चीज़ें फर्स्ट हैंड पता चली कि फाइनली हो सकता है आप जो नंबर्स पेपर में पढ़ रहे हो उसमें कितना फिक्शन है, कितना रियलिटी है. एंड दीज आर नुआंसेस दैट यू लर्न ओवर टाइम, राइट. फॉर समवन हु जस्ट रीड्स अ पीस ऑफ पेपर, मे बी उसे लगे कि हाँ ये चीज़ बहुत अच्छी है या ये बहुत ख़राब है, बट द रियलिटी कुड बी वेरी डिफरेंट. सो ये जो एक था कि बिटवीन वॉट इज ऑन पेपर एंड वॉट द रियलिटी इज, this over a period of time was something I was able to acknowledge and understand. Okay. So then I got a chance to work with ITC as an industrial trainee. Oh wow. So this happened to be in their strategic planning function in Calcutta in corporate finance. Okay. During that time, I actually understood or how to read the numbers well. Okay. Luckily, I had a role which was involved in me tracking competition for ITC. Okay. So while ITC was present in multiple sectors, right from IT to tobacco to FMCG, we had a list of companies that we used to actively track on a daily basis. Okay. Whether it was share price movement, quarterly results, कोई bulk block deal हो रही है. तो उस समय you can say my dimension or my thinking about looking at numbers changed drastically. So before this, I was trying to understand how accounts are made. बट अब मुझे ये जानना था कि what is the story that the number is trying to say. So अगर हम FMCG ट्रैक कर रहे हैं, why is Britannia's cost of material consumed way higher than what Parle is at or what Patanjali is at? तो उसका आंसर ये पता चलता था कि भाई उनके जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स है या उनके जो प्रोडक्ट्स है उसमें एक सर्टेन डिग्री ऑफ क्वालिटी कंट्रोल है जिसके कारण उनका रॉ मटेरियल कॉस्ट हमेशा हाई रहता था. To an extent कि if you look at it from the management side, this could be something which is there is an inefficiency involved कि इनका cost of material consumed इतना high क्यों है, which means process में कोई inefficiency है या procurement में कोई inefficiency है. But that also unfolded. There was a CEO change, a new CEO came, and then that was the trigger that was there for the stock. So these are things again I could understand in hindsight. So that happened almost back in 14 to 15. उसके बाद after I cleared my CA, I again got an opportunity to work with ITC. So this time I was taking care of the treasury function for the hotels division. Wow. And during that time, I got to know a lot of things about return on capital or rather return of capital. Okay. Being more important than return on capital. Return of capital, that means capital वापस करना is more important than return on capital. अच्छा ठीक है. So while ITC has a great treasury pool to manage, but
the fact that they have this focus to ensure कि हमारा capital protected रहे. आज आप कोई भी company में किसी भी treasury function में देखोगे, they do a lot of bold things. लॉन्ग शॉर्ट कर लिया, या हमने कुछ अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स खरीद लिए, या हमने कुछ हाई यील्ड डेट में पैसे डाल दिए. सो ऑन दैट लेवल आई थिंक दे वर वेरी क्लियर दैट what we need to be very particular about कि हमारा capital protected रहे. Returns is something we don't want to optimize for, which I think for a company of that scale was just a philosophy that they had. Okay. So as such, ऐसा नहीं था कि ट्रेजरी में कुछ बहुत ज़्यादा एक्टिव मनी मैनेजमेंट करना था. इट वाज क्लियरली लेड आउट कि द ओनली प्लेस वेयर यू कुड पार्क सरप्लस फंड्स वाज आइदर अ फिक्स्ड डिपॉजिट और अ लिक्विड फंड. दैट्स इट. ट्रेजरी मैनेजमेंट हुआ. सो ये तो थी वन पार्ट ऑफ माय जॉब. ऑब्वियसली दिस वाज नॉट समथिंग व्हिच आई वुड डू फुल टाइम, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी वुड आल्सो हैंडल ऑल फॉरेन पेमेंट्स फॉर द डिवीजन. ओके. So foreign payments में there was still a lot of paperwork that was involved, getting the compliances in order, 15 CACB, CA से लेना, to take advice कि आपकी withholding tax जो foreign payments में जा रही है वो कम हो. So that was a very tedious process. And उसके बाद to ensure that you're covered. So again, a large part of the treasury, because the company is so big, hotels is something which has a lot of imports coming in. There could be IT which is exporting a lot of services. So एक सेंट्रल लेवल पे उसकी हेजिंग होती थी जिससे हमारा करेंसी रिस्क कटे. तो ये हेजिंग कौन करता था? तो ये हेजिंग सेंट्रल टीम से होती थी कैलकाटा से. बिकॉज़ हेजिंग का बुक्स जो है वो मेन होल्डिंग कंपनी. करेक्ट. अच्छा. So we would feed into that main function which is controlled centrally. So I think a lot of companies today have this kind of a setup. So a lot of functions are central and different businesses have different you can say cost centers or different profit centers जिसके लिए लोग accountable हो. So this was another part of what I used to do, and a lot of people don't know this, but जैसे most of the hotels, if you see ITC के बहुत सारे hotels है, they come under the name of luxury collection. This earlier used to be a part of a company called Starwood, and then Starwood got acquired by Marriott. Okay. So now you'll see most of the global brands, चाहे आप Westin पकड़ लो, Luxury Collection पकड़ लो, JW, Fairfield, all of this are now a part of Marriott. अच्छा. So ITC used to, and we still do, ITC still pays a license fee to Marriott to use this name. And what that in effect does is it gives us access to foreign tourists. Okay. So handling the remittance of this license payment was also a big part of what my role was. Okay. So this kind of opened up, a lot of dimensions about, you can say, okay, there's one element of treasury, there's one element of handling domestic payments and collections which are happening on a day-to-day basis, and then the foreign payment angle. So ensuring compliances are made, you are hedged, so you are always in constant touch with the central team to ensure whether covers have been taken or not. And then finally, ensure that आपका कोई capital जो है वो protected रहे. मतलब capital में loss नहीं होना चाहिए, return on top जो हो, that's a plus. So that was like a 3-year stint which I had with ITC. 3 साल IT जैसी मेहनत ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बने रहना, कितना लर्निंग हुआ होगा आपको? नहीं जी, आई मीन अभी कुछ सालों पहले मैंने देखा था. सो लार्ज पार्ट ऑफ एक जो मेरा ट्रेजरी फंक्शन का जो एक कोर डिलीवरेबल था ऑन एवरी डे. सो एवरीथिंग इज ऑन द सिस्टम. कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि मैनुअल अकाउंट्स हो रही है. एवरीथिंग इज ऑन ERP. अब पैन इंडिया सारे होटल्स का पेमेंट के लिए एक पेमेंट फाइल एनक्रिप्ट होके बैंक सर्वर पे अपलोड होता था. अच्छा. एंड एट सम लेवल देयर वाज सम IT लेवल एंड मैनुअल लेवल चेक्स दैट आई हैड टू एंश्योर कि ये कंप्लायंसेस हो और ये फाइल एनक्रिप्टेड हो. टू अ लेवल कि आई यूज्ड टू फील कि ये जो पूरा काम है, इस काम में व्हाट इज माय वैल्यू एड, या एट द सेम टाइम व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वर्क, राइट? एंड फॉर मी आई वाज लाइक दिस जस्ट डजंट फील लाइक समथिंग दैट ये होना चाहिए, या ये कुछ ऐसी चीज है जो अननेसेसरी है. कट टू 1 year बैक देयर वाज अ लिस्टेड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी. उसमें एक पेमेंट फ्रॉड आया. पेमेंट फ्रॉड में ये है कि जो बैंक में पेमेंट फाइल अपलोड होती थी उसमें किसी ने अकाउंट डिटेल्स चेंज कर दी, IFSC कोड चेंज कर दिए, और कुछ 7-8 करोड़ की फ्रॉड हुई. अरे बाप रे. एंड दिस वाज अ लिस्टेड कंपनी backed by all the best investors that you can think of. And then I was able to relate this कि controls, processes and systems की कितनी बड़ी importance होती है. And especially, you can say that early on in my career, I had the privilege to work with an organization like this, to understand that these processes and systems are relied
from, like generation to generation. Now, if I'm not there, if someone else is there, the company still has to run, right? So that means your subconscious mind was kind of trained to be more in favorable of companies which have better control and processes, और वो अब आपको हेल्प कर रहा होगा आपके स्टॉक इवैल्यूएशन टेक्निक। बिल्कुल। एंड आई थिंक अगेन इससे और एक चीज ये भी आती है कि फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज सो बिग एंड विच काइंड ऑफ रन्स ऑन ऑटो पायलट, इन प्रोसेसेस एंड सिस्टम्स का होना बहुत जरूरी है कंपेयर टू समवन विच इज वेरी स्मॉल। हो सकता है किसी की 20 मेंबर की टीम हो, सो दे ऑल्सो हैव टू बी निम्बल, बट दैट कांट हैपन एट द कॉस्ट ऑफ रिलैक्सिंग कंट्रोल्स। बिकॉज क्या होता है, निम्बल से बड़े होने में आजकल टाइम नहीं लगता। आज अगर हम जोमेटो की जर्नी देखें, 8 साल पहले उनका 600 करोड़ का टर्नओवर था, आज 6000 करोड़ है। तो अब 8 साल में उन्होंने ये जो ब्लिट स्केल किया है, at opportune time they also need to build those processes and controls कि जब ये 6 से 60 हो तब ये issues नहीं आए। So I think this whole experience gave me a good understanding about processes, systems obviously, and what is the importance of controls. सही है। So that was the whole journey. सही है। And just because we are talking about ITC तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। So हो सकता है दोस्तों ये वीडियो चल जाए लंबा, रहिएगा, बिकॉज बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ITC। 3 साल पहले जब आप ITC में थे तो उस समय भाव मोटा मोटी 180-200 था जी, और आज हो गया 440। ठीक है, उस समय आपको क्या अंडर वैल्यूड लगता था और क्या आपको अभी अंडर वैल्यूड लगता है? हाँ, ये बताइए। अब तो आप ITC में हो नहीं, तो वी कैन टेक इनपुट्स फ्रॉम यू बिकॉज पूरा इंडिया ओन करता है ITC। सो बिल्कुल, अगर हम फ्रेंचाइजी की बात करें, internally having worked there, I know that there are processes and there are systems. Like if you have to even do something or do a change, it has to be ratified and ensured that company की जो overall governance norms है उसको rely करे। अब प्राइस 180 क्यों गई इसका कोई आंसर नहीं है, राइट? अब 180 से 440 क्यों गई इसका भी कोई आंसर नहीं है। ये डिप्लोमेटिक आंसर नहीं चलेगा। But yes, at 180, obviously, looking back in hindsight, it was a no-brainer buy, right? Did I buy? Yes, I had some allocation. It was in my father's portfolio, but I think we also were very early to sell it. Because the only reason why we allocated capital there was, if nothing, the downside is protected by the div yield. Correct. Right? उस समय I think almost 7-7.25 की div yield हो चुकी थी at 180. Right. Nothing had changed about the business except for the fact that ठीक है, एक पूरी इकोनॉमी लॉकडाउन में चली गई, तो ठीक है, होटल्स नहीं चल रहे हैं, बट आटा चल रहा था, सैवलॉन चल रहा था, सिगरेट्स अगेन काफ़ी नॉन डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन है, तो उसके भी सप्लाई चेन्स में कुछ इश्यूज हुए थे, बट आई थिंक वो भी काइंड ऑफ वाज मैनेज्ड वेल फॉर ऑल द टोबैको कंपनीज फॉर दैट मैटर। सो दैट वे बिजनेस में कोई डेट नहीं थी, ROC वाज लाइक रियली गुड, तो एज सच कुछ डाउनसाइड नहीं था। तो येस, एट 180 इट वाज अ ग्रेट फ्रेंचाइजी टू ओन। टुडे अभी आज प्राइस 440 है, देयर इज अ डीमर्जर व्हिच इज हैपनिंग, सो ये एक बड़ा कंसर्न था इन्वेस्टर्स का कि ये डीमर्ज नहीं हो रहा है। So I think even now, I think it's a great business to own if someone can really take a 10-year view and hold on to it, because if you see their main business, cigarettes, that's doing very well. That's a business which has globally done very well, और ऐसा नहीं है कि इंडिया में कल कोई एक दूसरा प्लेयर आके सिगरेट्स बनाने वाला है। और रही बात इनकी बाकी बिजनेसेस की, चाहे वो FMCG हो, पेपर हो, होटल्स हो, एग्री हो, ऑल ऑफ देम आर डूइंग वेरी वेल एंड दे हैव लीडरशिप पोजीशंस। ऐसा अगर 1 में नहीं है तो 2 में है, 2 में नहीं है तो 3 में। आज अगर हम पेपर कंपनीज की बात करें, फॉर द लास्ट 1.5 years, ऑल पेपर कंपनीज हैव बीन ऑल द रेज। देयर आर सो मेनी ट्रिगर्स, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, most of these paper companies had a problem of getting pulp. So they used, you can say, last 6-7 साल to get backward integration in order. So चाहे हम West Coast की बात करें, TNPL की बात करें, all of them are now fully vertically integrated. Now ITC happens to be one of the oldest vertically integrated paper plants. Above ITC, you can't play for just paper. But even the fact that they are in paper, they're actually the biggest paper player in India. Hotels की भी अगर बात करें, after Taj, Oberoi's and Leela, I think it's comparable to like a number 2 or a number 3. कुछ markets में their property, like ITC Maurya की अगर हम बात करें, any diplomat across the world, any global leader which comes to India, to Delhi, they stay in Maurya. Correct. So that's a name that they've made for themselves. Calcutta में again today we have the privilege to see
Two ITCs. Two ITCs and something as grand as Royal Bengal. Correct. Something that maybe growing up we would have never thought कि ऐसा कुछ एक structure आए. So yeah, I mean that way I think even today it's a great business to own provided someone can take a 10-year view. अब 6 महीने में क्या होगा या साल भर में क्या होगा, no one knows. So that is साकेत से ITC बात करा लो, ये जैसे मुत्तू सर है ना ट्विटर पे, he can speak for many hours. साकेत can also, so just engine change कर देते हैं. So बिल्कुल. Now what you are doing? अभी आप क्या कर रहे हैं? So after ITC, I actually moved to a company called Phillip Morris International. US की company है, India में they have an unlisted subsidiary. Because of FDA restrictions, they don't sell tobacco directly, so they sell it through a company called Godfrey Phillip India, which is listed. So Phillip Morris में I was there for a short span of time. That's where I got to really know how a tobacco business works. Because within ITC, I didn't know much about how tobacco works. अच्छा. So हमारी focus was always on hotels or treasury or corporate functions. But that's when I was able to appreciate how big of a giant ITC is really in cigarettes, and not just as far as numbers are concerned, but distribution की भी अगर बात करें. So I spent a short amount of time there, and that's when I had moved to Calcutta because COVID had hit, and that's when I found this newfound interest of writing online. This was 2019, 2020 की बात है. That's when I connected with you virtually on Twitter. And as one thing would lead to another, I had written a series of 2-3 articles. So I had written a deep dive on InfoEdge, then I had written a deep dive on SpiceJet, which was a kind of like a forensic piece. And both these pieces were picked up by investing.com, and they published it on their platform. अब उससे हुआ ये कि a lot of people started reaching out. And in fact, even Phillip Morris happened through a cold call. I was active on LinkedIn. Someone reached out to me saying that, hey, there's an opportunity here. And as luck would have it, मेरा हमेशा से interest था कि I should do something in equities or markets is something that excites me. So at that point, there was a fund being set up in Calcutta called Tusk Investments, and the CIO of that fund, Pranay Agarwal, he was a partner at McKinsey in Dubai. So he was shifting back and setting up this, and he reached out to me on LinkedIn. I ended up meeting him, and for the last 3 years, I've been working with him as a part of his fund. Amazing. क्या स्टोरी है. वैसे जब मैं पहले साकेत से मिला था तो बड़े ये होते ना, एक यंग सा बच्चा टाइप जो कुछ करना चाहता है लाइफ में, ठीक है, तो उस समय हम इतना भाव नहीं दे रहे थे जितना अभी दे रहे हैं. ठीक है, वे तो बहुत लोग आते हैं जो मार्केट में, बट देन व्हाट आई सी इन साकेत है उसकी जो एक परसिस्टेंसी है, जो पैशन को कन्वर्ट जो इसने किया प्रोफेशन पे, इट्स कमेंडेबल. तो जो लोग यंग हैं, जो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टिंग साइड में प्रॉब्ली एक बड़ा करियर बनाना चाहते हैं या डायरेक्शन देख रहे हैं, ही इज नियरेस्ट टू अ रोल मॉडल. मे बी इन 2-3 years आई विल स्टार्ट यूजिंग यू एज अ रोल मॉडल, क्योंकि थोड़ा समय भी मार्केट को देना पड़ता है ना बिफोर यू कॉल योरसेल्फ अ रोल मॉडल. बट हाँ, द फैक्ट दैट नाउ ही इज इन फेस टू फेस, तो अब ऐसा क्रेडिबिलिटी तो होगी इनकी. नो, बट ही इज डन अ गुड वर्क, एंड आपने जस्ट एक ग्लिम्स देखा इस वीडियो में about his thought process, the clarity he has. और कल जो वीडियो रिलीज़ होगा उसमें विल डू वेरी डीप डाइव इनटू द फिलॉसफी, द कॉन्सेप्ट्स. तो कल का वीडियो भी मज़ेदार होने वाला है. सो मेक श्योर दैट यू आर वॉचिंग दैट वीडियो. जिसने पहली बार ये वीडियो देखा है, कल का वीडियो नहीं देखा, तो आई थिंक यू गोइंग टू नॉट कंप्लीट दैट लर्निंग. सो साकेत, कल मिलते हैं, एंड वी हैव फ्यू लर्नर्स ऑल्सो फॉर यू हु विल आस्क क्वेश्चंस, बिकॉज मुझे लगने लग गया कि अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ. द क्रिएटिविटी ऑफ क्वेश्चंस हैव गॉन डाउन, सो आई थॉट वी नीड मोर यंगर ऑडियंस हु कैन आस्क यू मोर क्वेश्चंस. सो विल हैव ग्रेट गाइस हु विल आस्क यू क्वेश्चंस. सो सी टुमारो. ओके, या ऑलराइट गाइस, कल मिलते हैं. और 5 बजे मेरा टाइम बुक्ड है ना, 5 बजे कल. सी यू. There's another segment of people. They are actually defined as high earners, not rich yet. So it's called Henry. अच्छा. Again, these are people, who work a job. They have a decent income coming in. But at the same time, they're also very aspirational. So they want the best brands. They want to go on a foreign tour. So going forward, there is a case that, your expenses are something which are going to continue to increase. Which is why it's kind of important that your retirement or, money that's going to maybe, be saved for a rainy day is allocated the right way. So, and I think kahin na kahin to understand about what your goals are,
it could be short term, it could be medium term, it could be something which is beyond 10 years. Usse you get a view, or you get some sort of clarity कि how much money do I need at what level. Otherwise it's just, हाँ income आ रहा है, salary आ रही है, खर्चे हो रहे हैं, and life goes on. So we are trying to create a structure or a method in which you define what your needs are, you define what your aspirations are, and accordingly do the allocations accordingly. So what are the questions that we are trying to ask? So we are actually solving for just 4 basic questions. How much, how to invest, where to invest, and then you measure your outcome.